हेलो एवरीवन वेलकम टू पीडब्ल्यू ओपीएससी वाला आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आम डिस्कशन करवा ये टॉपिक आपनकर एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आसी इट इज हेल्पफुल फॉर GS2 एंड GS4 रिसेंट जंतर मंतर स्ट्राइक ऊपर समस्त जानते एवं केमती यंग मास को सहित जो इनजस्टिस है कंटिन्यूअसली एग्जाम पेपर लीक है एग्जाम जो मैंने अपियर करते एंजाइटी बढ़ला राइट टू ड्रीम which is supposed to be there in under article 21 of the Indian Constitution, right to life and personal liberty under जोटा रहिबा कथा when that is violated केमती राजरास्ता को यूथ ओल्लै आसिले एवं यूथ माने ओल्लैला परे सिटीजन्स पार्टिसिपेशन बढ़िला परे गवर्नमेंट रो अकाउंटेबिलिटी बढ़िला एवं अकाउंटेबिलिटी स्टेप अनुसार एजुकेशन मिनिस्टर मध्य रिजाइन कर तो ये सब ऊपर हम इन डिटेल डिस्कशन करबा आज क्लास रे ये टॉपिक होची इमोशनल इंटेलिजेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन गवर्नेंस केस स्टडी माध्यम रे डिस्कस करबी लेट्स से एथिक्स GS4 रे जदि केस स्टडी आसुची ताले कोन आसु लेट्स से यू आर एन ऑफिसर यू आर अ सिविल सर्वेंट लार्ज स्टूडेंट प्रोटेस्ट erupted over alleged exam irregularities जदि एग्जाम इरेगुलारिटीज पई स्टूडेंट प्रोटेस्ट बढ़िला कोन कहल पेपर लीक हवा कारण स्टूडेंट मानकर प्रोटेस्ट बढ़िला पब्लिक एंगर बढ़िला public anger is high, social media is active, and institutions are being criticized. Institutions जो माने exam conduct करंती, जो माने watchdog हिसाब रे काम करिवा कथा, जो माने fair and transparent public examination conduct करिवा कथा, से माने criticize करा जाउछ तले ए सिचुएशन ने how are you going to handle this situation using the principle of emotional intelligence and good governance. Emotional intelligence दीटा टॉपिक एटी इंपोर्टेंट आपनक पई इमोशनल इंटेलिजेंस एंड गुड गवर्नेंस केमिति आपण गुड गवर्नेंस एंश्योर करी बाय यूजिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस तल जीएस लिंकेज जदि हम देखिबा जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक रो टू क्वेश्चन आसी परिबो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर क्वेश्चन आसी परिबो करंट अफेयर रे जदि का रिक्रूटमेंट प्रोसेस पेपर लीक पब्लिक एंजाइटी पब्लिक प्रोटेस्ट या ऊपर क्वेश्चन आसी परिबो सो केस स्टडी कोन कहउची केस स्टडी कहउची कि देयर इज स्टूडेंट प्रोटेस्ट एग्जाम एंजाइटी पिला प्रिपेयर होउछंदी बारंबार पाठ पढुछंदी दउछंदी परीक्षा दउछंदी जहा कहै दउछ कोन पई परीक्षा राइट टू ड्रीम जे नीट परीक्षा दउची से कोन डॉक्टर होआ पई ड्रीम सो दैट इज कॉल्ड राइट टू ड्रीम हैला स्टूडेंट एटी प्रोटेस्ट करूची पब्लिक एंगर पढुची गवर्नेंस चैलेंज कोन क्रिएट होची ना ट्रांसपेरेंसी कोन एटी क्रिएट होची प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ऑनेस्टी integrity so these are the governance related challenges बुझियला so large scale protest कोन पई ना irregularities in the public examination there is dissatisfaction from the aspirants side aspirant माने dissatisfaction कोन पई ना बारंबार प्रश्न पत्र त्रुटि और प्रश्न पत्र लीक हे जाउची जोथरे ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एग्जामिनेशन कमी जाउची तो फर्स्ट पॉइंट होची प्रोटेस्ट बढ़िला काहे कोन पई ये प्रोटेस्ट बढ़िला प्रोटेस्ट बढ़िया पछरे कारण थिला पेपर लीक माने गवर्नमेंट एग्जाम रे पेपर लीक देखो ये नुआ कथा नहै ये एशियन कंट्री मान कथा स्पेसिफिकली मु कहबी सेम टाइप ऑफ प्रोटेस्ट हमकु देखिया को मिलथिला आपण बांग्लादेश रो मूवमेंट कथा कोन बांग्लादेश रो सेम टाइप ऑफ इशू होइतिला गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रोटेस्ट बढ़िला परे बांग्लादेश रो प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दवा पड़थिला जानिथिबे ये किछ दिन तळे ये न्यूज रहथिला और सेम टाइप ऑफ सिचुएशन नेपाल रे जेनजी प्रोटेस्ट जो आपण देखिया को मिले सेम टाइप ऑफ इशू अराइज करथिला म्यांमार रे मध्ये सेम टाइप ऑफ कंडीशन अराइज कर सारछि हैला फिलीपाइंस रे सेम टाइप ऑफ कंडीशन सो हम एशियन कंट्रीज देखिबा एशियन कंट्री रेट ऑफ करप्शन जदि आपण करप्शन इंडेक्स देखिबे एटी करप्शन इंडेक्स रे एशियन कंट्री गुडा को टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज इन केस ऑफ करप्शन हैला तो केवल ये इंडिया रे क्वेश्चन नुहे इंडिया रे कथा नुहे अनेक गुडे डेवलपिंग कंट्रीज रे सेम टाइप ऑफ जिंस हमकु देखिया को मिलछि so issues are related to paper leak issues are related to delayed in recruitment procedure trust deficit कहा ऊपर आपन कर ट्रस्ट कमी जाछि पब्लिक ट्रस्ट कमुछि कहा ऊपर ना पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मान को ऊपर हैला एवं ट्रिगर इवेंट गोटे पर गोटे हम देखिबा ताले कॉमन रीजन कोन थला ना पेपर लीक कैंसलेशन पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम लॉन्ग रिक्रूटमेंट डिले लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड परसीव्ड अनफेयरनेस इन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन लैक ऑफ so it is this is gradually it created latent anger within the society it created latent anger within the society ये कौन कला ना society भितरे latent anger this is the key word
है ना latent anger. So वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट सोशल मीडिया कैंपेन्स पब्लिक मूवमेंट ये सब हमको देखा मिला ठीक है सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हमें इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए एठी आपण करी कोन पारी ना यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन और क्राइसिस वेरी कामली आपन कोन करियो पड़ियो ना प्रोटेस्ट बिल्ड यू हैव टू बिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस यू हैव टू इंप्रूव कम्युनिकेशन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट यू हैव टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी नाउ ये हला ये जो पॉइंट को दीज आर द कीवर्ड्स ए पॉइंट आपन को एग्जाम रे लिखियो पड़ियो ए पॉइंट लिखिले आपन एथिक्स गवर्नेंस रे मार्क पाइ है सो इमोशनल इंटेलिजेंस रे पांचटा पॉइंट एठी आपन को पई इंपोर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन मोटिवेशन एम्पैथी एंड सोशल स्किल मु डिस्कस करिवि ये पांचटा पॉइंट डिस्कस करिवि सो so emotional first point emotional intelligence कोन इमोशनल इंटेलिजेंस रो अर्थ होची आउ जनकर इमोशन को बुझिबा एवं इमोशन को बुझिबा सहित अंडरस्टैंडिंग दैट इमोशन मैनेजिंग कहार इमोशन मैनेजिंग अनदर पर्सनस इमोशन सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक इमोशन यू हैव टू एज एन ऑफिसर यू हैव टू अंडरस्टैंड पब्लिक इमोशन एंड यू हैव टू मैनेज देयर इमोशन यदि आपण मैनेज करि पले देन it will not result to such a big strike ये वाला बड़ा स्ट्राइक रो रुपये न बने ना क्वेश्चन एटी इमोशनल इंटेलिजेंस फेल काहे गेला बिकॉज ऑफ पोर कम्युनिकेशन को टू ना गवर्नमेंट बा स्टेट रु स्टूडेंट मान को पब्लिक स्टेट देखो गोटे जिन को इन वन साइड स्टेट इन अनदर साइड देयर इज पब्लिक नाउ पब्लिक आउ स्टेट आंका भीतर कम्युनिकेशन केमिति हुए ना आंका भीतर कम्युनिकेशन हुए थ्रू सिविल सर्विस बाक को कोन ना सिविल सर्विस बाक को पब्लिक सर्विस सिविल सर्विस बाक कोन कहले पब्लिक सर्विस सो एटी पब्लिक सर्विस बा सिविल सर्विस कम्युनिकेट करबा दरकार कहार स्टेट रो डिसीजन टाको विथ द पब्लिक ये जिनसटा हम एटी लैक पाइले ना लैंग्वेज व्हेन योर लैंग्वेज बिकम्स हार्श whatever happened if there is any mistake in governance if there is any governance deficit the government is supposed to accept those governance deficits गवर्नमेंट एक्सेप्ट करिया दरकार कि हां ए जगह रे भूल जाय सो वी शुड गो फॉर रिफॉर्म इफ गवर्नमेंट विल शो अ वेरी हार्श टोन इफ गवर्नमेंट विल से यू इन अ हार्श टोन एंड टेक्सचर देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम बिकॉज़ पीपल विल नॉट एक्सेप्ट दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री so there is no one above the law there is rule of law there is constitutional supremacy there is legal supremacy which पर्सन कि रूल ऑफ लॉ अछि इंडिया रे तो जेतु रूल ऑफ लॉ अछि यू हैव टू रेस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ नो वन इज above the law now the politicians are not above the law the parliament is not above the law the judiciary even is not above the law the legislature executive judiciary they derive their power from the constitution itself so in India constitutional supremacy prevails you have to protect you have to promote and you have to derive all the administrative and governance related values from the constitution only so as per law apan ko reply debar achi empathy now in this case empathy was very low government was not able to understand the people's sentiment specifically the public sentiment of the youth kon ko ajaye ajira शिशु कालीन भविष्यत कालीन नागरिक now ajira youth hi कालीन भविष्यत कालीन नागरिक in one side we are very much happy कि India is having a very good demographic dividends youth population am पाखरे बहुत अधिक अछि हम खुशी होचे in one side and we have to utilize that demographic dividend if you don't utilize that demographic dividend properly that will be converted to demographic disaster the same people will be involved in social media abuse they will be involved in drug abuse they may join their hand with the left wing extremists they may join their hand with the terrorist outfits ba kon se chori dakaiti ithre sab man involved hai paran so in one side this is a resource for us this population this huge population is a resource for us and in another side this is it has to be handled very sensitively and carefully if you properly sensitively handle no korchundi then that may erupt that demographic dividend may become demographic disaster so low empathy was shown to these people reactive behavior of the government was reactive and strike korchundi semanक upare लाठी चार्ज करवा semanक upare tear gas लुहवा gas छाड़िवा ये सब शो करछु आपन कोन ना लो बिहेवियर बा लो रिएक्टिव बिहेवियर हला so two major components of emotional intelligence fail in this situation dita important point we discuss kari first is self regulation and empathy so self regulation officials fails to control their frustration irritation so mane emotionally charged sentiment ku properly implement kari parlen ki officer man they have to come for a dialogue they have to
confirm those things through by using maybe media, maybe social media, press conference. Is of there is no single press conference on this. Now only when the it erupted, ये बहुत अधिक situation तो बेसी खराब पे गला then only the officials or either your legislature bureaucrats executives, only executives are coming to news or media after that. तापर executive बाहर question. Now executive एटा को आरंभ रु हैंडल करिवार थिला. Executive social media रे कहिले but कहिला बेलको लेट हे सलान. केतेबेले कहउछन after resignation of the education minister. Now empathy, they fail to recognize emotional stress experienced by the students, parents, family. Now India bhaliya gote country job paiya bahut kashta. That's why people are struggling very hard to get a government job or to get a seat in the government college or a medical college, any college. So not only the candidate, the family and the entire society is in pressure. So semanakar stress बुझा दरकार, parents का stress, family stress ये सब बुझा दरकार. So public administration of key principle is perception often matters more than intention. How do you see an object? केमिति आपण देखुछन, that is perception. So insensitive response it kon when say don't waste our time. Judiciary by virtue of article 32 142, judiciary is the guardian of the constitution. If anything happens to the constitution, any damage to the constitution, it is responsibility of the judiciary, specifically the Supreme Court, to protect it. The Supreme Court was silent on the matter when this sensitive issue was presented before the Honorable Apex Court. Sentence or statement like don't waste our time. Don't waste our time. Now this insensitive response by the organs of the state, it is more painful to the students. So it is kon darkar thila na emotional intelligence report. Now what is right, kon it kariba uchit. Now you should have given an emotionally positive, emotionally intelligent response. Your concern is understandable. We understand your concern. We understand your concern. Okay, so we'll take care of it. We'll take care of it. Now what a positive concern एठी हमको देखैबार थिला, बुझिला. So both communicate and the same procedural message, but the emotional impact is completely different. So emotional, ebe बुझि पाले, why is emotional intelligence important during a crisis communication? Emotional intelligence काहे की important crisis situation? है ना? Okay. Now perception versus intention. Perception आमे कोन tone matters, केमिति आपण कहउछन. Symbolism matters, public perception shapes legitimacy. So government institutions are judged by their actions, not only by actions. केमिति कोन action नउची government, केमिति action नउची is not important. ता सहित आउ कोन देखुचे एठी, how are these communicated, केमिति communicate होउची. So जो way रे आपण communicate करछन, you should have give respectful language, public message, symbolic gesture, ये सब आवश्यकता अछि. कोन कहली ये सब आवश्यकता अछि. Okay, so कल government रो responsibility एठी कोन, what are the responsibility of the government? Government could have respond early respond करिवा दरकार थिला. Government should act proportionately. Government anticipate करिवा दरकार कि ए हवा को जाउची, public anger बढ़िलानी, public trust erosion हेलानी. So government could intelligence input नबार थिला, media monitoring करिवा थिला, social media analysis करिवा थिला, citizen feedback नबार थिला, local administration to report नबार थिला. So this is what the government could have anticipated. Timely response मध्ये मिल पार नथिला. Government has to acknowledge the public concern. Government could transparently communicate करिवा थिला. Government is not elected to involve in corruption. Transparent government, good governance ensure करिवा होची government ର basic objective. Should announce investigation announce करियो, provide clear timelines, demonstrate accountability, ये सब करिवार आवश्यकता. Proportionate action, law and order should be maintained using minimum necessary force. This is proportionate action. जितने कम now lathi charge, when we do lathi charge on specifically the youth, the future of the country, it gives a very negative message to the society. It gives a very negative message to the society.
because they are not outsiders, they are our own people, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? So trust legitimacy कौन दरकार एठी ना transparency accountability fairness and public confidence को जितिबा, because good governance completely depends on public trust हैला. सो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन एठी कोन थिला, आमे कहबा एठी गवर्नमेंट जहा कला सेया न करी आउ किछि करि पाथन तने व्हाट एक्स्ट्रा कुड हैव द गवर्नमेंट डन, गवर्नमेंट एई परिप्रेक्षी रे एई कॉन्टेक्स्ट रे कोन एक्स्ट्रा करि पाथांदा ना फोर्स बेस्ड कंट्रोल हेवी पोलिसिंग सेक्शन 144 लगे पाथांदा, कर्फ्यू जहा को कहउजंदी आपण कर्फ्यू लगे पाथांदा, अरेस्ट करि पाथांदा बट कोन टेम्पररी टर्म पाई क्राउड डिस्पर्सल करि पाथांदा, इमीडिएट कंट्रोल लॉन्ग टर्म आउटकम ये सब करि पार रिड्यूस ट्रस्ट ये सब शो करि पाथांदा. डायलॉग एंड नेगोशिएशन मीटिंग स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स लिसनिंग टू द ग्रीवियंस कोन एक्चुअली प्रॉब्लम अछि, एक्चुअली प्रॉब्लम कोन बुझा दरकार ना. गवर्नमेंट कुड हैव गिवन द ऑप्शन ऑफ डायलॉग, सेमान सहित डिस्कशन करि पाथांदा, जदि डिस्कशन करथांदा ताले कोन ट्रस्ट बिल्ड हेतांदा, ये रेस्पॉन्स गवर्नमेंट बोली लोक कहितांदे कॉन्फ्लिक्ट कमी थांदा एटी हां कि नहीं. अकाउंटेबिलिटी मेजर्स रे गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर मानको सस्पेंड करिथांदा including executive including the minister education minister re-examination करिथांदा, compromise पेपर गुडा को कैंसिल करि परथांदा, एटा करथिले आउटकम कोन मिलिवो रिजल्ट कोन मिलथांदा ना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बढ़िथांदा, डेमोन्स्ट्रेट करथांदा ये कहिथांदा नहीं गवर्नमेंट एग्जाम रे फेयरनेस एक्जिस्ट करूची, कोन करथांदा ना गवर्नमेंट एग्जाम रे फेयरनेस एक्जिस्ट करू, जदि एति की गवर्नमेंट करिथांदा ताले लोक कहिथांदा नहीं गवर्नमेंट एग्जाम रे फेयरनेस एक्जिस्ट करूची, ट्रांसपेरेंसी एक्जिस्ट करूची, सो पीपल कैन होल्ड देयर कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम. आउ कौन करि परथांदा गवर्नमेंट डिले और अवॉइडेंस किछि दिन एमते कंटिन्यू करथले बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल, दिस इज अ वेरी रिस्की आउटकम, दिस इज नॉट एडवाइजेबल, गवर्नमेंट हैज टू बी प्रोएक्टिव एनफ. ओके ताले आपण एटी कोन लिखिबे जदि एथिक्स रे क्वेश्चन आसुची एथिकल पेपर रे, यू शुड टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन अ ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन. कंपैशन माने करुणा, कहा प्रति करुणा बा दया देखेबो, कहा प्रति दया देखेबो स्टूडेंट मानक प्रति. फेयरनेस फेयर वे रे एग्जाम कंडक्ट करो, इंटीग्रिटी केते समय पर्यंत वैल्यूज होल्ड करी एथिक्स को होल्ड करो परजंदी, रेस्पोंसिबनेस गवर्नमेंट हैज टू बी रेस्पोंसिबल, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दीची. ऑथोरिटीज मस्ट एक्सेप्ट रेस्पोंसिबिलिटी. एडमिनिस्ट्रेटर शुड अंडरस्टैंड इमोशनल स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट पेरेंट्स एंड देयर फैमिलीज. Responsive government should respond quickly, transparently, integrate recruitment process must remain impartial. Fairness, equal opportunity and justice ये सब ensure करिवा दरकार. तले long term stability आवश्यकता थला. You have to restore the trust, you have to strengthen legitimacy, compromise when necessary. तले एटी कोन करि परथान गवर्नमेंट कैन ऑर्डर फॉर री-एग्जामिनेशन, री-एग्जाम हो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करू and rectify the procedures, rectify the procedural mistakes, जहाँ जहाँ procedural mistake है ताको rectify करो. यदि GS mains रे यहाँ पर क्वेश्चन आसुची ताले आपण कोन लिखियो, क्वेश्चन को आसुची डायरेक्ट नाउ पॉलिटिकली एक्सागरेट करियो कि ये भलिया टॉपिक को चेष्टा करिवेनी, एटी क्वेश्चन आंसर सब लिखियो चेष्टा कर कोन लिखिले आपण मार्क पाइ GS4 रे. सो एटी यू डिफाइन व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, explain its relevance in managing public protest, repeated examination irregularity काहे की होची, public frustration सेत में बढ़ुची, latent anger बढ़ुची, trigger event कोन हैला, ये सब पॉइंट को डिस्कस करिवे. ना एठी डिस्कस करनु सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल, यार रोल कोन, कोठी इमोशनल इंटेलिजेंस कोठी फेल हैला, स्टेक होल्डर एनालिसिस, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, पेरेंट, गवर्नमेंट, एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जुडिशियरी, मीडिया एमानकर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी कोन है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी सब डिस्कस करूँ. एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स रेकमेंड करूँ कौन कौन एट गवर्नमेंट, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, you could expect dialogue with the government, transparency, accountability, proportional law and order measures, institutional reform, ये सब आपण एक्सपेक्ट करि पारि हैला. तो यू डिफाइन दिस टर्म्स अकाउंटेबिलिटी, कंपैशन, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, पब्लिक ट्रस्ट, ये सब लेखन. So conclusion ने लिखियो civil servant must combine emotional intelligence with ethical governance to resolve public issues. ठीक है. So इतरा में कौन पूछले key takeaways कौन, outcomes कौन ना, public protest emerge from systematic failure,
continuously systematically failure hela pare public protest ase. Emotional intelligence, this is an essential administrative competence. Communication is required between the government and the between the state, like state bhal lagyo, between the state and the public or citizens through public service. So public trust build up हवा दरकार, डायलॉग एम्पैथी बढ़िया दरकार, गुड गवर्नेंस एंश्योर हवा दरकार. ये सब पॉइंट को हाईलाइट करी आपण देखिया दरकार. नाउ आई होप यू आर वेरी मच क्लियर कि हमें कौन डिस्कस कले आज क्लास रे. ये टॉपिक आसला करंट इश्यूज को नहीं कि, तो ये करंट इश्यूज को केमिति आपण पढिबे, को पॉइंट को लिखिबे, को पॉइंट को स्किप करियो, को पॉइंट को एम्फासिस देवा दरकार, कीवर्ड कौन रहबा दरकार, आंसर स्ट्रक्चर, इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन ने कौन रहबा दरकार, एवं स्पेसिफिकली एथिक्स बा वैल्यूज को ह्यूमन वैल्यूज को एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज को इंपोर्टेंस दरकार आई डिस्कस्ड. प्लीज नोट इट डाउन, आपको नोट करंतु, लेखिक रखंतु, परीक्षा रे ई एरिया को यूज करंतु. Let's wind up this session. That's all for the session. Thank you. See you in the next class.